and gentlemen, yes, today is the trailer of the Thursday release of the blockbuster that will hit the screens this time a day earlier. Yes, Election Day results on the 8th of December, and today we bring to you the exit polls, and this is the 2022 verdict before the 2024 mandate is out. The poll of polls has categorically stated that brand Modi is the vote magnet for the BJP. There is nothing left in the grey when it comes to Modi's unparalleled connection with the voters and his charisma across the length and breadth of his home state in Gujarat and the hill state of Himachal Pradesh. Let's decode the region-wise numbers and the overall numbers of Times Now ETG research survey. And let's take a look at the numbers coming on your screen. Gujarat coming up, and that is the region-wise report card. This is the seat share for Gujarat Central, 61 seats in this region. 48 to the BJP, 4 to the Aam Aadmi Party, 9 to the Congress, 0 for the others. So BJP way ahead, Arvind Kejriwal lagging behind the Congress party. Let's take a look at the next region, and the next region is Saurashtra and Kutch region, and in this region 54 seats, 42 go to the BJP, 4 to the Aam Aadmi Party, 7 to the Congress, 1 to the others, and that's the way it's stacked. Between two regions, the BJP almost 10 short of the halfway mark. Let's go across to North Gujarat now, and North Gujarat, BJP gets 21 out of the 32 seats, Aam Aadmi Party at 1, Congress somewhat in northern Gujarat gets 10, and that's a saving grace for the Congress party. And then BJP is past the halfway mark in these three regions, and south of Gujarat 35 seats, BJP gets 28, and the remaining 7 shared between the Congress getting 4, Aam Aadmi Party 2, others 1. So the total number coming up on your screens, BJP getting 139 seats, and that is a record number, breaking its own record of 2002 at 129 by 10 seats more, 139 seats for the BJP, 11 for the Aam Aadmi Party. Congress gets 30, others get 2. So Arvind Kejriwal will have to walk home with 11 seats, not being able to capitalize as much as he would have wanted from the Congress party. And that's all the polls. The poll number, 139 for the Congress, for the BJP. Times Now ETG poll, Jan Ki Baat gives 128, TV9 survey gives 128, PMark gives 138, Access My India 140, and C Voter gives 134. Congress ranges between 23 to about 45. That is the way Congress is stacked. Aam Aadmi Party between 4 and 15. The way it is stacked up for the Aam Aadmi Party, way behind the Congress party, and others are ranging between 1 to 5. That's the average number of the poll of polls, 134, still making history, bettering its previous high of 129 seats, 36 for the Congress, 9 for the Aam Aadmi Party, 3 for others. So Gujarat under BJP's belt, there was no suspense in that, but the margin and the record will be important, and the BJP will be looking closely at that. Let's take a look at what this will mean then for politics of the future. And let's just take the takeaways the Gujarat result shows us, and the takeaways firing on your screen. Brand Modi just completely destroys the opposition. That is the big message coming out of this poll of polls. And if I can just say, electoral dominance continues. BJP consolidates hold on these two key states, and it's Modi all the way. Takeaway 2,
Gujarat and Himachal have 30 Lok Sabha seats. The ground is fertile for 2019 repeat in 2024. Also, if you look at it, BJP has managed to address some rural discontent in Gujarat because its rural performance has improved, and this will be something the BJP will be looking closely at. Prime Minister Modi's vote-catching ability remains unmatchable, and that will be the opposition's headache. Aam Aadmi Party, not a principal challenger to the BJP, but has dented Congress vote share, and the Congress has a new headache on its hand. Also, uphill task for anti-BJP bloc ahead of 24 polls. That's what the takeaways look like. And now if we look at what happens in Himachal, let's take a look at what happens. Local leadership is not strong for the AAP and the Congress, and that could make the big dent. And let's take a look at Himachal. Himachal very clearly also going the BJP way. At least in a majority of the polls, there is one poll only which differs. But first, let's take a look at Times Now ETG research polls. 38 to the BJP. Congress gets 28. Aam Aadmi Party doesn't open its account. Others get 2. So the difference between the BJP and in this state, the Congress did have a chance. Even then, they're 10 seats behind, and BJP could make a 37-year-old record. Repeating the government in Himachal has not happened in 37 years. The BJP could upset that as well. And let's take a look at the poll numbers for Himachal. And virtually all polls give it to the BJP except Axis, My Axis poll, which gives a lead to the Congress party. All the other polls give, I think we have the India TV My Axis poll also needs to be added to this, and that will show that Congress is ahead of the BJP. All other show the BJP is ahead. So even in Himachal, we're looking at whichever way you look at it, the BJP in dominant. Let's listen in to what the fight is all about in Gujarat. As C.R. Patil says that he's got it all sorted out, it is Ishudan Gadvi, the chief ministerial candidate, who wants to differ but doesn't have much to say about the science of pollsters. देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी। 27 साल के बाद और 5 सालों के लिए यहां सरकार बन रही है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा सीट आने वाली है, सबसे ज्यादा लीड के साथ हमारे कैंडिडेट जीतने वाले हैं, और टोटल वोट शेयर भी हमारा एक रिकॉर्ड आने वाला है। जो आपने कहा कि कोई सरकार बनने की बात कर रहा है, मेरा उनको यही कहना है कि पहले एक बार अकाउंट खोल के आइए, फिर बात करेंगे। जब तीसरी पार्टी कोई राज्य में जाती है तो आप सभी का आकलन सही नहीं निकलता है। जब आप दिल्ली में पहली बार जब आम आदमी पार्टी लड़ी तो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपनी डिपॉजिट बचा ले तो भी बहुत है, और आपने देखा होगा कि 28 सीट में सरकार बनी थी। पंजाब में भी यही हाल था। इस बार देखो, हम खुद क्योंकि मैंने तो बहुत ग्राउंड जीरो पे काम किया है, तकरीबन 15 महीने में 1,20,000 किलोमीटर का मैंने टूरिंग की है, लोगों से मिला हूं। लोग बदलाव चाहते थे, लोग परिवर्तन चाहते थे, और हम भी डेली का सैंपल लेकर सर्वे करते थे। ऐसा नहीं था कि हम हवा में बातें करते थे। इसलिए इस सारे एग्जिट पोल हैं, ये 8 तारीख को गलत इसलिए होंगे कि अभी जो आप सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल, और दूसरा पंडित जो मतलब कि एनालिटिकल जो होते हैं पॉलिटिकल पंडित, वो 2017 की कांग्रेस को देखते हैं, 2017 की भाजपा को देखते हैं, 2012 की देखते हैं। लेकिन इसके बाद का जो परिवर्तन आता है, तीसरी पार्टी जब एंट्री करती है तभी एंट्री कर पाती है। जो पहली या दूसरी पार्टी खत्म होती है या तो कमजोर होती है, तब तीसरी पार्टी एंट्री कर सकती है। बहुत समझना आप। So the legitimate question we are asking on the news hour tonight: is the saffron poll juggernaut unstoppable,
Is the BJP completely unstoppable? That's the question. And the hashtag December 8th with Times Now. The debate on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. And joining me tonight, Dr. Anand Ranganathan, also with me, Smita Prakash, senior journalist and editor of ANI, Dr. Akashdeep Muni, political analyst, supports the Aam Aadmi Party, Sanjay Jha, suspended Congress leader, Ashutosh, senior journalist, Acharya Pramod Krishnam, senior leader of the Congress Party, Ghanshyam Tiwari, national spokesperson of the Samajwadi Party, Kartik Reddy, national spokesperson of the TRS, Asim Wakar Khan, joining us in just a bit. He's the national spokesperson of the AIMIM. But my first question goes to Dr. Sudhanshu Trivedi, member of parliament and national spokesperson of the BJP. And Dr. Sudhanshu Trivedi, it's on the wall, except one poll. All other polls give Himachal to you. And Gujarat, of course, you seem to be making history with the highest ever number being posted. What are the lessons for the Congress Party and the Aam Aadmi Party after this poll? If we look at Gujarat, the picture is very clear that after 27 years of successive pro-development, pro-poor and Gujarat pride, these were the three pillars on which we were moving, and over and above, the enormous popularity of our Prime Minister Shri Narendra Modi was adding to this factor, and BJP is going to set a record after West Bengal that a party can be in power for more than 30 years. And if you look at the difference, where was Bengal when they came into power and when they left? Calcutta was considered as the most industrialized city at the time, and Calcutta was ruined by the time. And on the other hand, you look at the development of Gujarat. So that shows the model of development which a party can have and which party can deprive. Now coming to Himachal, it is considered to be a very close, and even few months back, most of the pre-poll projections were saying that the Congress is going to easily have a win. Now the situation is gradually changing, and now the results are showing, barring one, that BJP is going to form the government, since it is a very small state. So considering the margin of error, if it goes against us, still we will be in a position to form the government, and if it comes in favor of us, then we may be equal to what the number we were having previously in the previous elections. So my just submission as far as Congress party is concerned, अगर ये हिमाचल में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, if they are improving by their previous tally, तो उसका वो क्रेडिट किसको देंगे? राहुल गांधी की अनुपस्थिति को या प्रियंका गांधी की उपस्थिति को, या प्रियंका की उपस्थिति के कारण राहुल की अनुपस्थिति को? So it is for them to decide that. And as far as Gujarat is concerned, it was very surprising for most of the political analysts, forget about people like us who are representative of a political party, that why Congress was not fighting at all and why they have left so much the battlefield. And from there, Aam Aadmi Party was able to make certain inroads, which in long run is going to be a more problematic scene for Congress as far as Gujarat is concerned. So what I think that it is another, you can say, the opinion or the mandate of the people, if your exit poll goes correct. But what my impression is, let the final results come, and we are hopeful that whatever is being projected in the exit poll, the actual result will be much better than that. इससे भी बेहतर हो जाएगा तो आचार्य जी आप कहां जाएंगे? आचार्य जी, चांदी की थाली में सोने के चम्मच से परोसा आपने पंजाब आम आदमी पार्टी को, अब वही जो है आम आदमी पार्टी गले की हड्डी बन गया है गुजरात में। अब ना कांग्रेस का राहुल गांधी युवराज, ना प्रियंका वाड्रा जी जा रही हैं वहां, क्या कांग्रेस ने लड़ाई का मैदान ही छोड़ दिया है? देखिए नाविका जी, गले की हड्डी कोई किसी के नहीं बनता है। सब अपने अपने परिश्रम से, अपने अपनी मेहनत से, अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और जनता के सामने जाते हैं।
गले की हड्डी अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बनते तो हिमाचल में भी बनते। हिमाचल में तो उनको कोई सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपके हिसाब से, जो एग्जिट पोल के को मैं एग्जिट पोल को देख रहा हूं। सवाल इस बात का है कि बीजेपी अपनी खूबियों से जीत रही है या कांग्रेस अपनी कमजोरियों से हार रही है। ये एक बड़ा सवाल है जो हम पार्टी के लेवल पे हमें अपने आप से पूछना है और अब चिंतन भी करना है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है, हमें अभी भी उम्मीद है कि हिमाचल में हम सरकार बना लेंगे, लेकिन आपका एग्जिट पोल अगर सच होता है तो निश्चित ही ये एक गंभीर विषय है और ये बहुत ही आत्मचिंतन के साथ साथ चिंता का विषय भी है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में मेहनत की तो उनको वहां अच्छा वोट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें नहीं निकल रही हैं, ऐसा आपका एग्जिट पोल बता रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा था। सवाल ये नहीं है कि कौन किसका वोट खा रहा है, ये तो ठीक है, जब चार आदमी लड़ेंगे, चार पहलवान लड़ेंगे तो कोई किसी का दाम मारेगा, कोई किसी का दाम मारेगा। मगर नाविका जी, सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है, नीति है या उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसमें जरूर कोई ना कोई कमी है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अगर पार्टी जीत गई, अरे भाई पार्टी अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाती है तो निश्चित ही हिमाचल प्रदेश के नेताओं का और जो वहां के प्रभारी हैं उनको श्रेय जाना चाहिए। और गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी वहां के प्रभारियों को लेनी पड़ेगी। ये तो एक सीधी सी बात है। बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। कांग्रेस पार्टी अगर हारती है तब भी इन्हें अच्छा लगता है, आम आदमी पार्टी हार रही है तभी इन्हें अच्छा लगता है। तो बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां, अब उन्हें सोचना है कि अगर 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है तो कांग्रेस को भी अपने अंदर झांकना होगा। तमाम जो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बीजेपी को हराना चाहती हैं, उनको भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तब जाकर के नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी का विकल्प पैदा हो सकता है। वरना इसी तरह से आचार्य जी सिंह, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू। अब ये बीजेपी ने लड्डू किसी से छीने हैं या पार्टियां जाके उनके हाथ में रखाती हैं? Good evening, Navika. Look, let me simplify things and put things in perspective. The last time there was a Congress government in Gujarat, both you and Rahul Gandhi were 25 years old. So, let's... Sorry, are you telling her age? Thank you very much. No, but, to use a very iconic film dialogue, गुजरात में बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। Opposition A has to unite. You cannot have any vote cutting. B, please realize that unlike a lot of other states that BJP is currently ruling, Gujarat is very different from Karnataka, from Rajasthan, from MP, that keeps switching parties, because Gujarat is a showcase state for BJP. It is the flagship. As they say, what Gujarat does today, we will make India do tomorrow. They are trying to reflect what India would be in generations to come to what Gujarat is going to be right now and in generations to come. Now, opposition ने मुद्दे कैसे उठाए, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए, ये टैली करेंगे। मैं दो तीन इश्यूज मैं उठाना चाहूंगा। नंबर वन, कि गुजरात में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज बाहर जा रही हैं। आप डेटा देखें, the most preferred destination for businesses in the last 5 years is Gujarat, above even Maharashtra. Maharashtra is 12% of all projects. Gujarat is 14.7%, Karnataka is 9.5%. अच्छा, आप हेल्थ देखें, IMR Gujarat has reduced from 16 2001 to 23 now. आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें, आप कह रहे हैं गुजरात में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट इज 2.5%, इंडिया का एवरेज 8%, राजस्थान 25%। आप करप्शन की बात करें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिनकी ट्वीट्स राहुल गांधी और केजरीवाल रीट्वीट करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली गुजरात इज द लीस्ट करप्ट स्टेट। तो जाए कहां, करे तो करेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, बीजेपी माइट बी स्वीपिंग गुजरात, बीजेपी माइट बी विनिंग इन हिमाचल, but because BJP might be losing the MCD municipal elections in Delhi, Modi must resign. Modi must resign. हाँ, आकाशदीप मुनि जी. Who said Modi must resign? They didn't say. Aam Aadmi Party never said that the Modi must resign. But the point is very interesting that, गुजरात में अगर हम इसी एग्जिट पोल को कंसिडर करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की 26% वोट शेयर आ रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को घबरानी चाहिए, क्योंकि
कांग्रेस वो जो वोट शेयर जब चेंज हो रहा है, व्हेन द वोट शेयर इज बीइंग चेंज टू सीट्स, Congress is getting more and Aam Aadmi Party is getting less. It means that Aam Aadmi Party is going on the second plank in a wide range of number of seats. So in turn, from second, it can in the next election, of course, it can come to first. I am just considering your exit polls to be correct. But however, I don't agree with it. You're most free to look at all exit polls. Don't only look at ours, look at all. Gujarat, you're not toppling the Congress party. And Himachal, sorry to say, यहाँ 0 या 1 के बीच में लड़ाई है, इससे ज्यादा की लड़ाई नहीं। हिमाचल की तो बात हम कर ही नहीं रहे। हम तो गुजरात क्यों नहीं कर रहे? 26 क्यों नहीं कर रहे? गए तो थे ना, बड़ा बिगुल बजाकर आप गए तो थे वहाँ। नहीं, हम तो हमारे सारे नेता तो गुजरात में थे। अच्छा, हमारे सारे नेता गुजरात में थे, केजरीवाल जी गुजरात में थे, भगवान मान गुजरात में थे। इंटरेस्टिंगली एमसीडी इलेक्शंस जिसमें कि ना आम आदमी पार्टी जीत रही है, गुजरात में मुद्दा क्या था? आपने मुद्दा क्या उठाया? दोनों ने हार मान ली है। आपने मुद्दा क्या उठाया गुजरात? आपको बता दूं दर्शकों बता दूं कि 7 चीफ मिनिस्टर, 1 मिनट, 7 चीफ मिनिस्टर, hordes of ministers in MCD polls. Still then BJP lost. It shows, as I was saying, BJP might be, Modi must resign क्योंकि म्यूनिसिपल हार गए। It shows the BJP's grassroots reality. आपसे एक सवाल, नाविका 5 सेकंड, एक सवाल। आपने पंजाब में प्रॉमिस किया था कि वी विल गिव एवरी वुमन 1000 rupees. You made the similar promise in Gujarat. Please tell me, it has been what, 8 to 9 months since you've been in government in Punjab? Have you fulfilled that promise of giving 1000 rupees to every woman in Punjab? And if not, why not? I'll tell you because first of all, the Aam Aadmi Party has promised that they will be providing X number of amenities. They will provide. Rajdeep Muni, one minute. Allow me to come in. आपने जो प्रॉमिस किया और बहुत कुछ प्रॉमिस किया गुजरात में, कोई लेने नहीं आया आपका प्रॉमिस कि बिजली फ्री, पानी फ्री, ढिमका फ्री, ये फ्री, वो फ्री, कुछ नहीं हुआ। लेकिन असीम वकार जी, आप भी चुनाव लड़े हैं गुजरात में। मैं ये पूछना चाहती हूं कि गुजरात में अगर विपक्ष की तरफ, यानी कि बीजेपी के ऑपोजिट 3 पार्टियां खड़ी थीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM, क्या इसी का फायदा हुआ है बीजेपी को, या अब समय आ गया है कि विपक्ष की रणनीति तय होनी पड़ेगी और उसमें ऑल वर्सेस मोदी के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। एक बात तो क्लियर कर दूं, मोदी हर चुनाव में विजय हो रहे हैं, लेकिन वो अजय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। ऊंचा करो। दूसरी बात आपने पूछी कि 3 पार्टियां अगेंस्ट, 2 तरह से चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर आप जंग में हैं तो एक होता है कि हमारी रणनीति बेहतर है, हम हरा देंगे, और दूसरे लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि सामने वाला गलती करेगा तो हम जीत जाएंगे। बात को समझिए, एक होता है कि सामने वाला गलती करेगा तो हम जीतेंगे, और दूसरा होता है हमें कॉन्फिडेंस इतना अपने ऊपर है कि हम अपनी रणनीति बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे कि इसको हरा देंगे। इसमें बहुत फर्क है। जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो अभी तक के ये रणनीति बना रहे हैं कि सामने गलती करेंगे तो हम जीतेंगे। हमारे पास कोई रणनीति नहीं है, ये बात को समझना होगा। पहली वाली बात पर फिर जोर दे रहा हूं, मोदी अजय नहीं है, हारा जा सकते हैं। बस फर्क इतना है कि उस हार के तरीके को समझना पड़ेगा। बहुत सी चीजें चैनल्स पर बैठकर पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकती। रिजल्ट में क्या होगा, कौन कितनी सीट पाएगा, यह काम मेरा नहीं है। मैं सर्वे कंपनी नहीं चलाता, मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूं। मेरी पार्टी का नाम है AIMIM। मैं आखिर तक चुनाव की जो काउंटिंग होगी उसके आखिरी पल तक मैं यही कहूंगा मेरी पार्टी जीत रही है या मेरी पार्टी जीतेगी। वो तो बात की बात है। तो मुझसे आप ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं किसी की बात मान लूंगा। हम दिल्ली लड़े हैं, दिल्ली में भी हमारी ये स्ट्रेटेजी। हम गुजरात लड़े हैं, गुजरात में भी हमारी ये स्ट्रेटेजी।
एक बहुत अच्छी अहम बात अभी आई थी, किसने कही थी मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं आया मुझे। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी उसी की होगी जो वहां प्रभार संभाल रहा है, जो वहां का अध्यक्ष है, उसको समझना होगा। लेकिन अंदर की बात यह होती है कि जो अध्यक्ष है, क्या स्ट्रेटेजी वो बना रहा है या दूसरे लोग बना रहे हैं, या स्ट्रेटेजी उस पर थोपी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि फेस उसका है और स्ट्रेटेजी कोई थोप रहा है ऊपर से। सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर बोल रहा हूं, जिनके लिए बोल रहा हूं वो समझें, मोदी अजय नहीं है, हराए जा सकते हैं। 2024 में भी 2 साल बाकी हैं। इजी है नहीं, आप अगर बता दें कि किसके लिए बोल रहे हैं तो मैं उनसे जवाब ले लेती हूं। ये आप आचार्य जी को बोल रहे हैं या सुधांशु त्रिवेदी जी को आप बता दें, या घनश्याम तिवारी जी भी हैं, या टीआरएस से कार्तिक रेड्डी जी, आप किनको बोल रहे हैं, मैं जवाब उनसे लेती हूं। देखिए, जिसको मैंने बोला है वो अपने आप जवाब दे देगा। अच्छा, तो सुधांशु जी ने हाथ उठाया है। सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए असीम वक्कार साहब को। नहीं, सुधांशु जी तो सरकार में है, हम तो सुधांशु जी के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं मोदी जी अजय नहीं है, हराए जा सकते हैं। तो संजय झा जी, मोदी जी हराए जा सकते हैं, लेकिन इसका नुस्खा किसके पास है मेरे पास, मुझसे लीजिएगा, मैं दूंगा आपको। जब मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो मेरे पास है नुस्खा। आपका नुस्खा कोई ले क्यों नहीं रहा? घनश्याम तिवारी जी, आप नुस्खा लेंगे AIMIM से? नमस्कार नमिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। मुझे लगता है कि इस देश में हर ऐसी सरकार जो जनता के खिलाफ काम करती है उसको जनता ही हराती है, यही नुस्खा है। और अगर जनता से डर नहीं होता तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए उसमें पुलिस ने जिस तरीके से अत्याचार किया, the way police behaved as a team of gundas, which was captured on video and the election commission went missing, demonstrates the true BJP model. It is not the Gujarat model that is the flagship of BJP. It is the model where the state machinery goes against the voter, the election commission is mute, the media does not raise a question, and people are not allowed to vote. That is a model, that is the flagship of BJP. And if BJP is winning Gujarat, and Anand, my friend, said that Transparency International lauds BJP on its performance on corruption, I think there will be a slow clap from the poor dead victims of Morbi. That Transparency International holds BJP as the flagship of anti-corruption government in Gujarat. As far as the exit polls are concerned, I respect all the polls, but the true picture will be clear if 3 major polls have happened: Himachal Pradesh, Gujarat and Delhi. Out of that, even in front of media, 2 major polls were keenly contested. One was Himachal, other was Delhi. And if BJP is losing in these 2, which some polls are suggesting, then BJP must think about it. That they are winning hands down in Gujarat is going to be obvious with what we are seeing in Uttar Pradesh. The way police is attacking the common man who goes to the booth, the elderly who goes to the booth to vote. Sudanshu ji, if you win, it is because the police is yours and the election commission is yours. And if you lose, it is because the opposition is extremely competent. How do you respond to this? What Mr. Ghanshyam Tiwari is saying, I think he is just laying down the premise of the inevitable defeat of his party. Previously, they lost Azamgarh, the seat which was vacated by Akhilesh Yadav ji. Now, they are all set to lose a seat vacated by their patriarch, late Mulayam Singh ji. So, whatever he is saying is nothing but he is trying to make a premise, as it was in the various previous cases. कभी EVM को दोष देना है, कभी इलेक्शन कमीशन को EC को दोष देना है, मगर अपना दोष नहीं देखना है। रामपुर भी गया, आजमगढ़ भी गया और मैनपुरी के ऊपर भी आपको यह बात करनी है। But one thing I would like to say, when Asim Wakar was saying that I have previously also said during the election that in Gujarat all other parties were fighting for different reasons. किसी को सरकार बनाने की लड़ाई नहीं थी, कांग्रेस को जमीन बचानी थी, आम आदमी पार्टी को हैसियत बनानी थी और MIM को आग लगानी थी। सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बनानी थी। इसलिए वो आपका एग्जिट पोल का रिजल्ट भी वही शो कर रहा है। हां, एक बात बहुत क्लियर है, MIM उन्होंने क्या बोला,
The name of my party is All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin, but this is a secular party. And they contest on 13 seats out of 182. मगर जो लोग अपनी राजनीतिक तेरहवीं की तरफ बढ़ते हैं वो 13 सीटों को ही सारा दोष देते हैं. Nobody is saying that Aam Aadmi Party is working as a spoiler for Congress Party. They are damaging Congress. But they always say that MIM, which is just concentrating on 13 Muslim seats, Muslim-dominated seats. So one thing is very clear, that the so-called secular parties are only focused on the Muslim vote, and MIM, which has just contested 1.3% of the assembly seats in the last 8 years, they are being held responsible if, by their own reason, Congress party or other so-called secular parties feared badly. लास्ट में एक सेंटेंस कहूंगा जो आचार्य जी ने कहा था कि भाजपा अपनी खूबी की वजह से जीत रही है या कांग्रेस अपनी कमी की वजह से. बस हल्का सा संशोधन करता हूं आपके सेंटेंस में सर. भाजपा अपनी खूबी की वजह से जीत रही है और कांग्रेस अपनी कमी की वजह से हार रही है. मतलब या की बजाय और कर दीजिए तो एनालिसिस विल बी वेरी क्लियर. आचार्य जी ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी आज 2024 के चुनाव के लिए अपने पदाधिकारियों की बैठक भी कर चुकी है. सॉरी, 2024 नहीं, 2023 में जो राज्यों के चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आज मिल चुकी है. अभी चुनाव पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था गुजरात में, चुनाव के नतीजे आने बाकी है, वहां काम शुरू हो गया है. कांग्रेस पार्टी कहां है? कब तक जोड़ेगी भारत? ये सवाल तो कांग्रेस का हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है. हम भी पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहाँ है. वो पार्टी जो देश को आज़ादी दिलाने में जिसकी भूमिका थी, वो पार्टी जिसने देश की आज़ादी के बाद इस देश के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो पार्टी जो सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलती थी, वो पार्टी जो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की विरासत को लेकर के चलती थी, तो उस पार्टी का ये हाल हो रहा है. उसका मुझे लगता है नाविका जी, एक तो मैं अगर जो आपके एग्जिट पोल सही हैं तो मैं बधाई देना चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी को कि भाई आपका परचम लहरा रहा है, बल्ले बल्ले हो रही है. तो आप धूल भी छू देते हैं तो वो सोना हो जाती है. ये आपका वक्त अच्छा है. और हम सोना भी अगर प्रस्तुत करते हैं तो उसे कोई रंग और पीतल नहीं समझ रहा है. तो ये तो आपका नक्षत्र बड़ा बढ़िया चल रहा है. पर मुझे एक बात और कहनी है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं नाविका जी, सिर्फ डिबेट के लिए नहीं कहना चाहता हूं. और वो बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रणनीतिकार हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्राम का प्रधानी का चुनाव कभी ना लड़ा ना लड़ने की सोचते हैं. वो सब राज्यसभा में पहुंच जाते हैं. और कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं, ऐसे जो नीति निर्धारण कर रहे हैं, जो कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ने का तसव्वुर नहीं करते हैं. वो देश में मोदी को हराने की रणनीति बनाते हैं. तो अंजाम ये होना सुनिश्चित है. सवाल इस बात का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो निश्चित ही उसे उसके नेतृत्व को श्रेय देना पड़ेगा. लेकिन मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जिट पोल गलत हो जाए और हिमाचल में हमारी सरकार बन जाए. लेकिन पता नहीं भगवान भी हमारी प्रार्थना पता नहीं सुनता है, नहीं सुनता. आजकल सुनने को तैयार नहीं है. और जनता को हम कहते हैं कि साहब हम आपको एक अच्छा शासन देंगे, जनता सुनने को तैयार नहीं है. तो आखिर हम क्या करें? ये सुधांशु जी बता दें या नाविका जी बता दें, आशुतोष जी बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा. लेकिन आजकल तो हम ऐसे हो गए कि हम राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आप ढूंढ कर लाए हैं तरकश में से कमी इतना बड़ा तीर. तो आप उनसे पूछिए, हम क्या आपको सजेशन देंगे. लेकिन हाथ उठ रहे हैं. सुधांशु जी पहले दे दे उन्हें, उनसे सवाल पूछा और फिर मैं आती हूं स्टूडियो में. नहीं नाविका जी सवाल इस बात का है कि इस समय जो एनालिसिस हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, ये सब अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं. अभी हमारे समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी जी ने अभी ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे, और आम आदमी पार्टी वाले अपनी बात कर रहे हैं. अरे भाई सवाल इस बात का, देश की जनता, पहली बात तो ये जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर लोग बैठे हैं, ये सब मैं इन्हें सो कॉल्ड सेकुलर कहना चाहता हूं. सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो ये नहीं है कि हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाओ तो सेकुलर बन जाओगे. ये जो जितने सेकुलर पार्टियां हैं ये सब हिंदू विरोधी हो रही हैं. और जितना ये हिंदू विरोध का इनके ऊपर जो चोगा है और ये ठप्पा है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा. अगर इन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी, ये सब ऐसी हारते रहेंगे. 2024 भी जाएगा, 2029 भी जाएगा, क्योंकि देश भावनाओं का देश है. और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं
कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो हिंदू विरोधी लोग हैं और हिंदू विरोधी तमगा बीजेपी ने हिंदू विरोधी तमगा हिंदू विरोधी ठप्पा कांग्रेस पर लगा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव के रास्ते पर चलना चाहती है या धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर हिंदू विरोध के उन नेताओं की सलाह पर चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की जो पदयात्रा उसमें पलीता लगाने का काम ऐसे नेता कर रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को उन नेताओं बहुत बड़ी बात आपने कही है, आपने बहुत बड़ी बात कही है आचार्य जी। राष्ट्र विरोधी ताकतें राहुल गांधी के साथ अगर जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ी आपने बात कही है। मुझे संजय झा जी सोच रहे होंगे कि भाई मैं सस्पेंडेड हूं क्या, आचार्य जी सस्पेंडेड है? नहीं, बट मैं एक सवाल आचार्य जी से, आचार्य जी अभी भी आप कांग्रेस में हैं क्या? एक मिनट मैं सीरियसली पूछना चाहती हूँ। जी एकमात्र धर्माचार्य हैं कांग्रेस पार्टी के। वो आ गए, आग में घी डालने आ गए। जो कांग्रेस की तरफ है उसका वक्तव्य सुन ले, बहुत क्लियर हो जाएगा कांग्रेस किस तरफ जा रही है। और जो आचार्य जी ने बोला ये बात नहीं है, ए के एंटोनी कमेटी 2014 में लिख चुकी है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई, तीसरी हारी। बिल्कुल। कार्तिक रेड्डी जी, if we are talking about 2024, do you think the word secularism has been used and abused by opposition parties other than the BJP? They are national opposition parties. They may be in power in their own states. But do you think this word has so badly been abused that today the opposition parties at a national level are paying the price for it? Good evening, Navika. I do not think any party should be ashamed of the word secular. Well, our constitution itself in its preamble calls India a secular union of states. So here's what I noticed in today's discussion, Navika. Out of all the panelists who are representing different opposition parties, the two glaring things that we have to talk about is one, as long as the opposition parties are modifying the Indian political scenario, these are the results we're going to see. Let's not make it an identity-centric politics. And the other thing I like to point out, as Acharya ji अभी अपन को बता रहे थे, पूरे जुड़ जाओ, पूरे राजनीतिक दल, पूरे सियासती दल एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ. I would say that would be a disaster for opposition in India. We should remember, Navika ji, the context of today's discussion is the elections in Gujarat and the elections in Himachal. Let's all remind the nation that Gujarat में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले या उनका मुख्यमंत्री बनने से पहले वहां बीजेपी सरकार था. And what was the role of our honorable Prime Minister for BJP to come to power then? So as long as we make politics to be modified in India, we try to spin it around identity-centric, this is what it's going to be. And it's also an insult. As long as we talk about Modi ji and his successes and his failures, we should remember Narendra Modi is nothing without his party, BJP, or even the RSS. So are we trying to insult the whole cadre and file of the BJP and RSS? No. It is an idea that BJP is floating. It is an ideology that we are fighting. It is a model they are presenting. All the opposition parties, including ours, or whatever party we are thinking of fighting the BJP, we should present a viable idea for India to pick it up. As long as we are fighting Modi, as long as we make it an identity-centric politics, this is how it's going to be. So, Smita Prakash, is the TRS a party that is not based on identity politics or family, recognized party? Are they saying something different? The question is, it's very evident that all the opposition parties are not on the same page to coming together and fighting the BJP. Till such time, do you think it is going to be advantage BJP? And of course, Narendra Modi is the catalyst. Well, I think the regional parties, like the TRS, they are punching above their weight. But when it comes to electoral victories, it is not going to show up that much. And that we will see in 2023 when there are several states which go into polls.
many of them where the BJP and the Congress is going to be one-on-one. As far as this election is concerned, whether Gujarat and about Gujarat and Himachal, I think very interesting points came up. I think I've heard Acharya Pramod Kishan say this, what he said today, about 15 times in the past couple of years, saying Chintan karenge, andar jhankna hoga. He's been saying this election after election on channel after channel. Somehow the Congress doesn't seem to be listening to its voices of reason. As far as what Anand said, that dawn dialogue कि बीजेपी को गुजरात में हराना नामुमकिन है. I think Asim Vakar is right in saying that every political party has to. हाँ, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. That was the dawn dialogue, and I think the BJP, the last thing they want to associate themselves is with dawn. But anyway, I think Asim Vakar is right in what he says, that nobody is indefeatable, right? The thing is that the BJP realizes it more than anybody else that they can be defeated, and that is why they fight every election with that in mind, that we can be defeated. So they don't win, they don't fight to just win, they fight to defeat the other party and to make sure that their margin is so high that no other political party tries to even compete with them. So as you had said earlier when you started this debate, that the Modi juggernaut is just rolling on, it chugs along, and what they are going to try and see, the BJP is going to try and see, is that in the next round of polls, the regional parties do not try to come up. Because you see, look at the other political parties which are trying to raise their heads, like you have the TRS coming up out here trying to give a national umbrella. The same thing can be said about other regional parties, say in Karnataka, which goes to polls in 2023. The BJP will make sure that it is a one-on-one with the Congress. And if the Congress performs as miserably as they are performing in this election in 2023, that would signify that the Bharat Jodo Yatra has come up to be a big knot. So I think this is just a curtain raiser for 2023. You can see the BJP is already getting its cards together to make sure that the AAP remains busy in Delhi and Punjab and doesn't make a headway in any other state. Already Gujarat is going to be quite bad unless they get more than 10 seats. So if they get more than 10 seats and they get a large vote percentage, then AAP is going to be a pain in the neck. Absolutely. And Ashutosh ji, you know, MCD elections, point taken, BJP is not being able to win. But if you look at the recent forays in elections, the Aam Aadmi Party lost in Uttar Pradesh, lost in Uttarakhand, lost almost, if the exit polls are to be believed, almost won't open their account in Himachal Pradesh, and in Gujarat they will gain some seats, but not enough, you know, to claim some major takeaways. I want to ask you, is now the opposition, especially the Aam Aadmi Party, you know, that they are the alternative to the Congress, as a national alternative to the Congress, at least that dream has been punctured a bit? See, Navika, I think first of all we have to hold our horses and we have to wait for 8th result. Because suppose if in Himachal Congress wins, in MCD the Aam Aadmi Party wins, and in Gujarat the BJP wins, then what will be the narrative? I think the narrative will be different. So today when we are talking about Gujarat, we are talking about Himachal Pradesh, we are talking about Aam Aadmi Party's performance. I don't see Aam Aadmi Party emerging as a national force for the simple reason, because Aam Aadmi Party to challenge Narendra Modi nationally, to challenge BJP nationally, first of all they have to win one single seat in Delhi parliamentary elections. In 2014 they lost 0. They did not win a single seat in a Lok Sabha election. In 2019 they again lost. In Punjab in 2014 they got 4 parliamentary seats. In 2019 1 parliamentary seat. Subsequently, when the by-election happened, they lost that seat also. So today in Lok Sabha, Aam Aadmi Party do not have a single seat. Now, imagine, here's the situation. Everybody is talking about Aam Aadmi Party is emerging in the national alternative. I agree with that. But the point is, even if in Gujarat, they manage to get 20% votes, it will be a remarkable achievement. But can they win Lok Sabha seats in Gujarat? In my opinion, no. So, Aam Aadmi Party is good in terms of optics, in terms of creating perceptions, in terms of Arvind Kejriwal's projecting that he is the real alternative. But the real alternative
should be in terms of seats in Lok Sabha. If that doesn't happen, then what? About opposition parties, I think अभी जो डॉन का एक डायलॉग था ना कि 11 मुल्कों की पुलिस खोज रही है, तो नरेंद्र मोदी को 11 की पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही है ना। हाँ, 11 राज्यों की एग्जैक्टली 11 राज्यों की नरेंद्र मोदी को खोज रही है। 17 में बीजेपी है, 11 राज्यों की। फैक्ट ये है कि टुडे अपोजिशन इज मच स्ट्रॉन्गर देन अपोजिशन विद द कांग्रेस सिस्टम वाज देयर. There are 11 states where the opposition are ruling there. There are the 4 states where BJP dislodged opposition and formed the government. But unfortunately, opposition, they can't come together. They have no national perspective. They have no national outlook. They have no national strategy, and that's why there is no national alternative to BJP and Narendra. So Sanjay Jha, sorry for coming late to you, but Sanjay Jha, do you think, between now and 2024 elections, is there असीम वकार जी, बस संजय झा जी के बाद आपके पास ही आ रही हूँ. संजय झा जी अभी तक बोले नहीं, फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ. संजय झा, in the next year and a half, do you think the opposition can do something dramatically different? Because आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो सच बोला है वो आपने भी बोला था. आप निकल चुके हैं पार्टी से, वो अभी तक तो हैं, लेकिन पता नहीं कल क्या होगा. But what happens in 2024? Can you really stop the Modi juggernaut? Navika, there are no permanent winners or losers in politics. That's the beauty of democracy. At some point you could be performing well, but a fatigue factor comes in and a political party can lose. So let's put that on the table. Having said that, I have to concede with I think all the panelists have mentioned the right point, that end of day, despite an underwhelming performance in Gujarat, if the BJP is able to win for the 7th time in a row, that is a manifestation of a serious inertia within the opposition. We have to accept it. We have to bite the bullet. And I blame the Congress for this singular atrophy within the opposition ranks. Let me give you one data point. I wrote it while the conversation was on. I'll give you the 9 states where ever since Congress has lost, it has not just lost, it's gone into hibernation, it's gone into wilderness. Gujarat, since 1995. We all know about UP, Bihar, since the early 1990s. Odisha since 2000. West Bengal, after the CPM came in, we never got in there. Delhi, in the last 8 years, down to 0. Telangana and Andhra Pradesh literally vanquished. And add to it, the relevance in Tamil Nadu, what you can't do without DMK. If you add all these seats together, Navika, you know how many Lok Sabha seats there are? It's over 300 Lok Sabha seats. If the Congress has allowed itself to get so marginalized that unless you have some kind of a coalition, you're not even relevant in the Lok Sabha, then I think you are offering the BJP a cakewalk. And Sudhanshu ji is my opposition MP or a leader, but I have great respect for the BJP for one thing. And I have their biggest critique on their ideology or their leadership. But I have always learned from my opposition. And what the opposition needs to learn from the BJP is this relentless hunger to work hard to win an election. The truth is that the Bharat Jodo Yatra is a fantastic initiative. I don't take that away. But if it does not give you electoral results, it's just a moral awakening, then you cannot say that I will save secularism or the progressive idea of India, etc., etc. So I think if the opposition doesn't understand the math of winning an election, but the bulk of the responsibility should be with the Congress, then I think Mr. Modi and the BJP are not just in the pole position like a Sebastian Vettel or a Schumacher or a Verstappen. They are likely to win the Formula Grand Prix because the opposition is puncturing its own tires. Asim Vakarji. मैंने देखिए, मैं सबको सुन रहा हूं. मैंने जो पहले कहा था मैं उसी बात पे अभी भी कायम हूं. देखिए, मैं नाम ले रहा हूं मोहम्मद रफी, बहुत अच्छे सिंगर गुजरे. मोहम्मद रफी साहब ने देशभक्ति के और फौज के बहुत से गाने गाए, भजन भी गाए. गानों से बड़ी ऊर्जा भर जाती थी. लेकिन मोहम्मद रफी को बंदूक लेकर बॉर्डर पे नहीं भेजा जा सकता था. वो गाने तो बढ़िया गा सकते थे, लेकिन बॉर्डर पर जब हमला होगा तो वहां कुलदीप सिंह चांदपुरी लड़ेंगे. कुलदीप सिंह चांदपुरी गाना नहीं गा सकते. तो जिसका जो काम है वो करने दीजिए. यहां उल्टा हो रहा है मैडम. मैं इतिहास को बहुत पसंद करता हूं, इतिहास को मैंने पढ़ा, मैं समझता हूं उसको. सिकंदर इसलिए महान था
कि सिकंदर के पास बेहतरीन रणनीतिकार, मशवरेकार, बेहतरीन योद्धा और कमांडर थे। अशोका भी इसीलिए महान था कि बेहतरीन योद्धा, बेहतरीन मशवरेकार, सलाहकार, रणनीतिकार और बेहतरीन कमांडर। अकबर भी इसीलिए महान कि बेहतरीन उसके पास मशवरेकार थे, रणनीतिकार थे, योद्धा थे और कमांडर थे। लेकिन उसी सिलसिले में जब आप बहादुर शाह जफर को देखेंगे तो बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह मुगल और अपने ही देश में, अपनी ही बादशाहत में 7 समंदर पार से आए हुए कुछ लोगों ने उन्हीं के देश के लोगों को अपने साथ मिलाकर बादशाह को अपनी कुर्सी से हटा दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया तो बहादुर शाह जफर नहीं, आप तो मुझे आज के कॉन्टेक्स्ट में बता दीजिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में बता दीजिए कि सिकंदर कौन है? जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि मोदी जी जीत रहे हैं। और बहादुर शाह जफर कौन है? मैडम सुनिए मैडम। नहीं, समय कम है, जल्दी बता दीजिए, सुधांशु जी जवाब देंगे। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, इसको सुनिए। आप क्यों नहीं सिकंदर बन जाते? सुनिए मैडम, मैंने बड़ी बात कही। मैंने कहा बाकी जो इसलिए महान थे कि उनके पास रणनीतिकार अच्छे थे, मशवरेकार अच्छे थे, योद्धा अच्छे थे। बहादुर शाह जफर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, उनका तख्त चला गया कि उनके पास शायर बहुत अच्छे थे। वाह, अच्छा, समझिए मैंने जो कहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए असीम वकार साहब को। असीम वकार साहब, समय कम है, सुधांशु जी आपको जवाब दे रहे। देखिए, एक तो मैं पहले साफ कर दूं कि सिकंदर महान था एक विदेशी थॉट है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण का कोई उल्लेख भारतीय इतिहास में नहीं है, सब यूनानियों ने लिखा और हम आज तक उससे पैबस्त हैं कि वो महान था। छोड़िए, अब आइए बहादुर शाह जफर पे। तो बहादुर शाह जफर, इन्होंने कहा शायर बड़े अच्छे थे, तो उनका एक शेर आज के जो सबसे युवा और व्याकुल नेता हैं जो अपनी यात्रा लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर बहादुर शाह जफर का वो शेर बहुत सही फिट बैठता है। क्या? न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। तो मुझे लगता है बहादुर शाह जफर की परंपरा में कौन चल रहा है, ये देश की जनता को समझने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हां, एक थिंग ऑन द सीरियस नोट मैं कहना चाहूंगा। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जो बोल रहे थे, एक लाइन और कह दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला, कोई नई बात तो नहीं बोली। AK एंटोनी साहब, जो हु इज हिमसेल्फ फ्रॉम ए माइनॉरिटी कम्युनिटी, उन्होंने क्लियर कट लिखा है। मगर सुनिए, गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है कि मुस्लिमों का पहला हक होना चाहिए, तो यह नहीं कहा जाता कि आप सस्पेंड हो जाएंगे। कमलनाथ कहते हैं 100% मुस्लिमों का वोट चाहिए, तो नहीं कहा जाता सस्पेंड हो जाएंगे। पर अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि हिंदुओं के अगेंस्ट से बोला जा रहा है, तो एक नेचुरल वॉइस उठती है फ्रॉम द सेक्युलर एस्टैब्लिशमेंट कि आप कांग्रेस से सस्पेंड तो नहीं हो जाएंगे। बस संजय झा जी, आपने सही कहा था, हमारे लोग मेहनत तो करते हैं, पर जिस आइडियोलॉजी से आप डिसएग्री करते हैं और हम डिसएग्री करते हैं, जनता को भी साफ दिख जाता है कि एक में तो गाय काटने से लेके हिंदू शब्द गंदा तक कोई नहीं कहता कांग्रेस से सस्पेंड हो जाएंगे। जरा सा कह दीजिए कि हिंदू के खिलाफ कांग्रेस में चल रहा है तो ये क्वेश्चन तो सेक्युलरिज्म आ जाता है। आनंद जी 5 सेकंड, ये भी देश की जनता क्लियर। ये अभी तक किसी ने मुद्दा उठाया नहीं, सुधांशु जी ने भी नहीं उठाया कि ये कंपटीशन देखिए, द विल टू विन एन इलेक्शन। कितने सारे ऐसे इनकम्बेंट बीजेपी एमएलए थे जिनको इस बार टिकट नहीं मिला। इस बात पे गौर किया जाए तो बीजेपी ऐसी पार्टी है जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें जीतना है और ये लोग हमें शायद ना जिता पाए। ये चीज, यही मुद्दा है जो बीजेपी को, यही होती है रणनीति, यही होती है स्ट्रैटेजी। लेकिन पिक्चरों के डायलॉग अगर चल रहे हैं तो मैं दर्शकों को बता दूं, व्यूअर्स, पिक्चर अभी बाकी है। आज था एग्जिट पोल, लेकिन 8 तारीख अभी बाकी है, 8th of December with Times Now, because we'll get you the quick and fastest results. Poll of polls tell us a story that the BJP might just vacate in Himachal Pradesh and Gujarat, though one poll swings the other way in Himachal Pradesh. But either which way, if the BJP wins both the states, it will create history. 37-year-old record to be broken in Himachal Pradesh, and yet another record of a 7th election victory in Gujarat. Well, it's all happening. Is it the planets and the nakshatra, or is it the Modi juggernaut? Well, viewers, I leave that to you. Thank you very much for joining me on the News Hour tonight.